आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा है? एन ओल्ड मैन विथ हाइपर एक मिनट एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इज एनी लॉस एक मिनट एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन इज ऑप्शन 1 देखेंगे डिजीज, ऑप्शन 1 डिजीज, ऑप्शन 2 इम्पेयरमेंट, ऑप्शन 2 इम्पेयरमेंट, ऑप्शन 3 डिसेबिलिटी, ऑप्शन 3 डिसेबिलिटी, ऑप्शन 4 हैंडीकैप, ऑप्शन 4 हैंडीकैप। फिर से देखिए एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शन इज डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप। द राइट आंसर इज इम्पेयरमेंट। द राइट आंसर इज इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन 45 ब्रिक इंसिनरेटर इज यूज्ड फॉर ब्रिक incinerator is used for brick incinerator is used for option 1 waste sharp, option 1 waste sharp, option 2 discarded medicine, option 2 discarded medicine, option 3 infectious waste, option 3 infectious waste, या ऑप्शन 4 डिस्पोजेबल आइटम, ऑप्शन 4 डिस्पोजेबल आइटम। फिर से देखिए ब्रिक इंसिनरेटर इज यूज्ड फॉर वेस्ट शार्प, डिस्कार्डेड मेडिसिन, इन्फेक्टेड वेस्ट एंड डिस्पोजेबल आइटम एंड द राइट आंसर इज इन्फेक्शियस वेस्ट। द राइट आंसर इज इन्फेक्शियस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 एंटी मलेरियल मंथ इज एंटी malarial month is option 1 January, option 1 January, option 2 March, option 2 March, option 3 June, option 3 June, option 4 September, option 4 September। anti malarial month is January, March, June, September। the right answer is June। the right answer is June। क्वेश्चन 47 देखेंगे। क्वेश्चन 47 इफ ए टेस्ट हैज कट ऑफ वैल्यू एट पॉइंट Z इट विल हैव। तो यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ग्राफ, ठीक है ना। ये एक पोर्शन है ग्राफ का, ये दूसरा पोर्शन है ग्राफ का। यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज हेल्दी पीपल, दिस इज हेल्दी पीपल एंड दिस इज डिजीज पीपल, दिस इज डिजीज पीपल, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं x y z, ठीक है। इफ ए टेस्ट हैज कट ऑफ वैल्यू एट पॉइंट Z इट विल हैव, ठीक है ना। इफ कट ऑफ इज एट Z, ठीक है, देन टेस्ट विल हैव ऑप्शन 1 हाई PPV, हाई पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ऑप्शन 2 लो PPV, लो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ऑप्शन 3 लो सेंसिटिविटी, ऑप्शन 4 हाई स्पेसिफिसिटी एंड द राइट आंसर इज लो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहे हैं ये लोग? टोटल लाइफ बर्थ और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एजेस, टोटल लाइफ बर्थ और फीमेल वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज इज ऑप्शन 1 जनरल फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन 2 बर्थ रेट, ऑप्शन 2 बर्थ रेट, ऑप्शन 3 जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, जनरल
general marital fertility rate, या ऑप्शन 4 नन, ऑप्शन 4 नन। फिर से देखिए, टोटल लाइफ बर्थ और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एजेस, जनरल फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट या नन। एंड द राइट आंसर इज जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इक्सोडिडे टिक ट्रांसमिट्स, इक्सोडिडे टिक ट्रांसमिट्स। ऑप्शन 1 Lyme disease, option 1 Lyme disease, option 2 scrub typhus, option 2 scrub typhus, option 3 rickettsial pox, option 3 rickettsial pox, या ऑप्शन 4 प्लेग, ऑप्शन 4 प्लेग। फिर से देखिए, इक्सोडिडे टिक ट्रांसमिट्स, लाइम डिजीज, स्क्रब टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स या प्लेग। एंड द राइट आंसर इज लाइम डिजीज, राइट आंसर इज लाइम डिजीज। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट कॉज्ड बाय, हार्डनेस ऑफ वाटर caused by all except, हार्डनेस ऑफ वाटर caused by all except। ऑप्शन 1 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन 4 कैल्शियम सल्फेट। फिर से देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन ऑफ 51 देखिए। क्वेश्चन ऑफ 51 क्या पूछ रहे हैं? पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, पेलेग्रा caused by deficiency of, पेलेग्रा caused by deficiency of। ऑप्शन 1 विटामिन B2, ऑप्शन 2 विटामिन B3, ऑप्शन 3 विटामिन B1, या ऑप्शन 4 फोलिक एसिड, ऑप्शन 4 फोलिक एसिड। फिर से देखिए, पेलेग्रा कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1 या फोलिक एसिड। राइट आंसर इज विटामिन B3, राइट आंसर इज विटामिन B3। क्वेश्चन ऑफ 52 देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ 52 क्या बोल रहा है? वर्कशॉप इज, ऑप्शन 1 डिस्कशन ऑफ 4 to 8 एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ ए ऑडियंस, डिस्कशन ऑफ 4 to 8 expert in front of audience, audience. Option 2 discussion between 6 to 12 member, discussion between 6 to 12 members. Option 3 series of 4 or more meetings, series of 4 or more meetings, या ऑप्शन 4 series of speeches on given subject, series of speeches on given subject, फिर से देखिए, वर्कशॉप इज डिस्कशन ऑफ 4 to 8 एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, डिस्कशन बिटवीन 6 to 12 members, series of 4 or more meetings, series of speeches on given subject. Right answer is series of 4 or more meetings. Workshop is series of 4 or more meetings. Question number 53 देखेंगे। Question number 53, following figure is example of, एक बार फिगर देख लीजिए, ये देखिए, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये एक वैल्यू है, उसके ऊपर वैल्यू बनी, ठीक है ना, उसके बाद वैल्यू घटी और घटी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है? ऑप्शन 1 हिस्टोग्राम, इट इज़ ए हिस्टोग्राम। ऑप्शन 2 इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऑप्शन 3 इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी कर्व, इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी कर्व। या ऑप्शन 4 इट इज़ ए बार चार्ट, इट इज़ ए बार
चार्ट। फिर से देखिए ये क्या है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व या बार चार्ट। राइट आंसर इज हिस्टोग्राम, इट इज ए हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, मेथड टू रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डाटा। मेथड टू रिप्रेजेंट qualitative data, qualitative data, method to represent qualitative data. Option 1 histogram, option 1 histogram, option 2 cumulative frequency curve, option 2 cumulative frequency curve, option 3 frequency polygon, option 3 frequency polygon, या option 4 bar chart, option 4 bar chart। देखिए मेथड टू रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डाटा, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बार चार्ट। द राइट आंसर इज बार चार्ट, राइट आंसर इज बार चार्ट। क्वेश्चन 55 देखेंगे। क्वेश्चन 55 पूछ रहे ए पॉर्निटिक इज डिफाइंड एज, ए पॉर्निटिक is defined as option 1 endemic in animal, endemic in animal, option 2 epidemic in animal, epidemic in animal, option 3 endemic in bird, endemic in bird, या option 4 epidemic in bird, epidemic in bird, epidemic in bird। फिर से देखिए ए पॉर्निटिक इज डिफाइंड एज एंडेमिक इन एनिमल, एपिडेमिक इन एनिमल, एंडेमिक इन बर्ड, एपिडेमिक इन बर्ड। राइट आंसर इज एपिडेमिक इन बर्ड। एपिडेमिक इन बर्ड को हम लोग एपॉर्निटिक कहते हैं, एपिडेमिक इन बर्ड को हम लोग एपॉर्निटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56, एम्पोरियाट्रिक्स इज ए साइंस डीलिंग विथ, ठीक है, तो एम्पोरियाट्रिक्स deals with option 1 health of travelers, option 1 health of travelers, option 2 occupational health, option 3 making new drugs, या option 4 genetic disease frequency, फिर से देखिए एम्पोरियाट्रिक्स डील्स विथ हेल्थ ऑफ ट्रैवलर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मेकिंग न्यू ड्रग या जेनेटिक डिजीज फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर इज हेल्थ ऑफ ट्रैवलर्स, एम्पोरियाट्रिक्स डील्स विथ हेल्थ ऑफ ट्रैवलर्स। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन 57, पैंडेमिक इज डिफाइंड एज, पैंडेमिक is defined as option 1 endemic in small population, option 2 endemic in large population, option 3 epidemic in small population, option 4 epidemic in large population, फिर से देखिए पैंडेमिक इज डिफाइंड एज एंडेमिक इन स्मॉल पॉपुलेशन, एंडेमिक इन लार्ज पॉपुलेशन, एपिडेमिक इन स्मॉल पॉपुलेशन, एपिडेमिक इन लार्ज पॉपुलेशन। द राइट आंसर इज एपिडेमिक इन लार्ज पॉपुलेशन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।